definite integrals are introduced in two senses. Number first, definite integral as directly heko is definite integrals they introduce karit, and number second, most importantly, definite integrals are introduced as limit of sum. ठीक है, गणित exercise में चीज विचन definite integrals as limit of sum. So if we have a function f of x, say f of x is a continuous function within some particular interval. F of x is a continuous function within a particular interval. Then its definite integral can be written as integration of a to b f of x dx. A to b f of x dx. Where in indefinite integration was written, so we were writing simply f of x dx. Integration of f of x dx. It directly kara image integration without using the limits. So but here we karan यह function integrate. ठीक है, मगर ये चे specific यात मज वनो सीते इस करा integrate function throughout it is domain, मगर ये चे तेम domain का हिस्सा नेवन. ठीक है, subset of that domain. ठीक है, that subset may be whole domain as well. So अगर इस चीज से if we have a function f of x अगर इस a पे b तान इंटीग्रेशन करो, ठीक है, within a particular interval, within a particular closed interval, so a to b f of x dx, ठीक है, then that is denoted by a to b f of x dx. ठीक है, so अगर इस function चे f of x which happens to be continuous in closed interval ab, then it is definite integral within this closed interval ab is denoted as integration of a to b f of x dx. ठीक है, wherein you see when ये value, this is called the lower value or lower limit. ठीक है, lower value or lower limit, and this thing is called upper value or upper limit. So upper value or upper limit. So simply speaking, is one ये function f of x, if this is continuous within the interval a to b, till heko एम definite integral is denoted करें by a to b f of x dx. ठीक है, a to b f of x dx. Where integration rule is already ये मस indefinite खतर चे तुम rule चे सारी applicable, मगर ये चीज़ पर last पर अकोई चीज़ add करा, we have the ये चीज़ constant of integration add करा किन constant of integration बजाय से constant of integration ऐसे करा तिम add when we were dealing with an indefinite curve, but here we have a definite curve that will have a definite and specific value. So as in suppose f of x and function which is continuous in the closed interval ab. First thing we have to do, if we have to find it as definite integral, first thing we have to do, we have to find it as antiderivative. So antiderivative khadrim rules chess already indefinite months you must rule already which m khadar we have to apply those rules. So f of x as in a to b f of x dx and definite integrals and ये function of f of x को guys evaluate करूँ. So first thing we will be looking for is we show कि f of x is करो गणना say we some sort of skip or omit these and limits. ठीक है, a to be upper value तो भी lower value कर थ्रो इस गणना करो इस entirely focus इस किस पर करो ये function is क्या integration. So say f of x is inside the integration karo, say that is obtained as a function f of x. ठीक है, so f of x here we are using different notation. F of x, this is small f of x means we are having a different function. As functions and karo is क्या differentiation करिए तो end result आ. ठीक है, different integration करिए तो end result आ, that will be called antiderivative. Say f of x is a function and this f of x is antiderivative. ठीक है, इम साथ ये f of x को antiderivative was good this f of x. ठीक है, which has value then lower value and upper value. ठीक है, so it will be written as a to b. ठीक है, यानी upper value वो चेस करूँ यात मस क्या upper value replace and minus चेस करूँ क्या lower value. ठीक है, so this will be f of upper value f of b minus f of a. ठीक है, so f of upper limit minus f of lower limit, f of upper limit minus f of lower limit. ठीक है, so simple concept चेस यात मस अगर इस integration या definite integration मस simply वुचन we first find the indefinite integrals में just antiderivative is hasil guys तात में simply replace करना function of the upper limit
minus function of the lower limit. ठीक है. So if we are finding the definite integral, then the definite integral of a function f of x is a to b f of x dx, where a is called a lower limit and b is called a upper limit. ठीक है. यह f of x is simply integration is करा इम integration rule is integration method is तुम करो apply तम से करो गणित indefinite integration f of x. ठीक है. f of x integration करिए तो anti derivatives हासिल कर say that is f of x. ठीक है. यह f of x पे वो upper values will be writing like this b to a. ठीक है. So then we will write f of upper limit minus lower limit, function of the upper limit minus function of the lower limit. ठीक है. Now definite integral as limit of sum. So definite integral as limit of sum. Say if we have a function x1 already definite use integration, it is also used to find the area under a curve. Area under a curve. Say if we have a curve y is equal to f of x, y is equal to f of x. Again यम curve है जे कहाँ ते graph वैसे. ठीक है. But to make it simple ऐसे यह थे shape में थ्राओ इस graph ताकि यम चीज़ से those will be much simpler to understand. Say if we have a curve y is equal to f of x, it has particular intervals मजे define करा. Say if we denote this within a to b. ठीक है. a to b इस ताई जन ची image integration या इमुक area under the curve. So a to b इस दरमियान जन ची वुचुन ये curve कूता area ची occupy करा. ठीक है. So what is the main thing we do ना इस पर इस गणितीय integration के इस गणित सी videos में अगर तो याद आए. ठीक है. गणित सी videos में ताकि क्या area under a curve. So to find this area we divide this whole area into small rectangles. ठीक है. ये area से करा divide into small rectangles. For that अगर इस ये closed interval a b है. ठीक है. We partition this closed interval a b into n sub intervals. ठीक है. एक करो इस divide into n sub intervals. Say if we have isn't a to b. ठीक है. a to b ये करो इस divide into n sub intervals. ठीक है. याद करो इस n हिस्स. Say if we have a is equal to isn't करो x naught पे शुरू. ठीक है. x naught and we take equal intervals. जित पे योर तांजा निमोस आख part. ठीक है. ब्याख part इथे पे ब्याख part again ब्याख हिस्स मगर यम सारी हिस्स क्या करो इस equal. ठीक है. n equal intervals. So we divide this ab into n equal parts or n equal intervals. So अगर ये पे योर तां ये distance है h. a पेट ये तां ये distance h. ठीक है. ये कैसे b h. So this will be again h. Distance is same. यम interval हों this length that is same. So this will be a अगर इस याद था ना x naught. ठीक है. So this is x1, this is x2, this is x3, this is x4, this is x5 up to say this is b is equal to xn. b is equal to xn. Now इस पर ते है कोई से लिखे या shape में से है कोई से लिखे से if we have a this is a. ठीक है. ये पेट योर तां यूसी length च ये पेट योर तां कोराई से h add. ठीक है. What is this point now? It will be a plus h. This will be a plus h. ठीक है. So ये पे यो होता है इसी ब्याक point चे आस कोरेस आह h add b करेस z h add. a इसको ना कुछ h करेस add z. So it will be a plus 2h. a plus 2h. Next we will have a plus 3h. ठीक है. a plus 3h. Plus up to last point क्या है? a plus nh. a plus nh. a plus nh. So you करो इस divide as so this will be a plus h, a plus 2h, a plus 3h plus up to a plus nh, a plus nh. ठीक है. ये पॉइंट जन करो इस a plus h इमेज क्या है हिरकन. So this will be f of a plus h. ये क्या है इमेज क्या है that will be f of a. ठीक है. This will be f of a. This will be f of a plus h. f of a plus h. वो जन छे रेक्टेंगल इस कारण जॉइन. ठीक है. रेक्टेंगल के इस पर करो इसी जॉइन. ये टॉप करो इस जॉइन. ठीक है. ये टॉप करो इस जॉइन. इथे पर जन छे f of this is a plus 2h. इमेज क्या है f of a plus 2h. a plus 2h. Again we will join this as गया ब्याक रेक्टेंगल हासिल. इथे पर f of a plus 3h. इमेज हिर कैन f of a plus 3h. इमेज हिर कैन f of a plus 3h. ठीक है. ब्याक रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल किस पर करो देखिए we will write like this. approximation error ठीक है. हिर कने किस एरिया ये गैस ना मज काउंट कीन. ठीक है. ये काउंट गैस तिम साथ we will guess to the best approximation. ये क्या यमन रेक्टेंगलन हुन साइज करो क्या कम. युता इस कम करो त्यूता गैस बेटर approximation. So इथे पर लास्ट पे क्या है. So this is now
this will be another rectangle इथे पर वन ब्याक rectangle ठीक है ब्याक अक rectangle last पे इस rectangle बन ठीक है last but one what will be that f of a plus n minus 1 into h a plus n minus 1 into h ठीक है here can you image f of a plus n minus 1 into h ठीक है and then we have last case f of a plus nh ठीक है this is here a plus nh as point here can as image क्या f of a plus nh now what will be area under this curve मगर यम खतर युस ये point करो ये join so it will be like this ठीक है ये point इस निमो at केमिक area इस निमो suppose वजन चेस area करो यम युस ये rectangle in rectangle area calculate how do we calculate its area simply length into breadth ठीक है length into breadth कुछ नहीं है इस पे होता है h ठीक है इस पे होता है ना breadth h what is its height now length क्या है ये पे होता है यूसी वैल्यू गो ना x डायरेक्शन मज कूता y डायरेक्शन मज कूता मगर y डायरेक्शन मज कूता ट्रैवल करान ये पे योर ताई कूता कोर ट्रैवल गो ना y सो दैट विल बी f ऑफ a यमुक y कोऑर्डिनेट गो ना f ऑफ a ठीक है सो एम रेक्टेंगल एरिया क्या है सो इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेडथ क्या है length f of a ठीक है so it will be h into f of a ठीक है इथे पे क्या है इम रेक्टेंगल एरिया h into f of a plus h length into breadth h into f of a plus h इम रेक्टेंगल एरिया क्या है h into f of a plus 2h प्रत कुन रेक्टेंगल यूस लेंथ ठीक है प्रत कुन रेक्टेंगल लेंथ चेंज गसान मगर ब्रेडथ क्या फिक्स ब्रेडथ क्या h प्रत कुन रेक्टेंगल ब्रेडथ दैट इज h ठीक है सो ब्रेडथ h मगर लेंथ वेरी गसान एक लेंथ ही f ऑफ a बेकी f ऑफ a plus h f of a plus 2h ठीक है अस कतन रेक्टेंगल मज कर डिवाइड n rectangle मज ठीक है n rectangle as in suppose a to b as in कोरी suppose 3 पॉइंटन मज कोरी डिवाइड 3 इक्वल पार्ट्स करित 1 2 3 ठीक है 3 इक्वल पार्ट्स कितना रेक्टेंगल्स बनन 1 2 3 ठीक है 1 2 3 यीता पार्ट गसन तीते रेक्टेंगल बनन सो एक्जेक्टली यतन आसन तिल किता n rectangles ठीक है so we'll have n rectangles ठीक है n rectangles मगर यूस last rectangle नेमो can you say what will be the height of that rectangle last rectangle यूस नेमो f of n आइसा किन f of a plus n minus 1 तमिज लेंथ क्या है f of a plus n minus 1 into h ठीक है तमिज लेंथ आइस f of a plus n minus 1 into h ठीक है क्या f of a plus n h नहीं किन f of a plus n minus 1 into h ठीक है इसको ना किन पे शुरू f of a पे कोर शुरू ठीक है इसको f of a पे यानी लास्ट इस रेक्टेंगल आइस तमेज इस लेंथ आइस दैट विल हैपन टू बी f of a plus n minus 1 into h ठीक है नाउ एरिया का बराबर है सो एरिया अंडर दिस कर्व इट विल बी इक्वल टू लेंथ into h into शाबाश h into so breadth into f of a so h into f of a plus human सारे rectangle चना इस ऐड करूँ ठीक है plus h into f of a plus h plus h into f of a plus 2h plus up to last term क्या है h into f of a plus n minus 1 into h ठीक है लास्ट चीज रेक्टेंगल तमेज चीज लेंथ दैट इज a plus n minus 1 into h ठीक है a plus n minus 1 into h अब यहाँ से h कॉमन निकालिए h इज एवरीवेयर सो h है कोई कॉमन करे सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर f of a plus h plus f of a plus 2h इथे पे f of a plus 3h f of a plus 4h 5h 6h लास्ट पे क्या है plus up to f of a plus n minus 1 into h f of a plus n minus 1 into h ठीक है but since we are adding all these terms so इथे कोई summation ते लिखे ठीक है summation ते लिखे now this sorry area so this will be area under the curve ये area under the curve this is denoted by summation and sum of all the rectangles denoted as the integral so it will be a to b ठीक है so ये integral है क्या so this will be denoted by a to b area under this curve y is equal to f of x so it will be a to b f of x dx so a to b f of x dx
ठीक है मगर इस एरिया देखिए इस एरिया में यह एरिया में एरर वी है अप्रोक्सीमेशन इन दिस एरिया तिकेज कह पार्ट हरकन कह स्पेसिस फिल गि कहें ठीक है ये एरिया गो न फिल कहें ये एरिया गो न फिल कहें यानी यथ एरिया मज क्या देयर आर सम एरर्स ठीक है सो एरर है मिनिमाइज सो एरर है मिनिमाइज कम साथ यम साथ एच वैल्यू डिक्रीज ठीक है एच यानी ये विड्थ यीजा कम गूता क्या बेटर अप्रोक्सीमेशन ठीक है ये विड्थ यीजा कम गूता बेटर अप्रोक्सीमेशन सो दैट मीन्स अगर h कर 10 to 0 ठीक है h कर 10 to 0 ठीक है ऑलमोस्ट यम साथ क्या 0 विड्थ नमो it will tend to 0 ठीक है 0 बराबर न कहें but it will tend to 0 मगर यम साथ h का 10 to 0 obviously तम साथ क्या n will tend to infinity ठीक है यानी याद करो क्या infinite parts इस पोर्शन याद करो infinite parts it will tend to infinity ठीक है so n will tend to infinity when h will tend to 0 ठीक है और we can state it the other way around when h tends to 0 n tends to infinity ठीक है so ये detail better approximation when we are taking the limiting case when we are taking n tends to infinity or h tends to 0 ठीक है but since we are dealing with a function of h so इसलिए को ये क्या so when h tends to 0 so this will be best approximation when limit h tends to 0 limit h tends to 0 ठीक है limit h tends to 0 वुचे h की वैल्यू अब देखिए h का वैल्यू so h की वैल्यू कत बराबर है h की वैल्यू कत पे हेको डिसाइड कर what will be value of h इस कुता निमो इंटरवल साइज ठीक है इंटरवल साइज सुकत बराबर है दैट विल बी साइज ऑफ द इंटरवल b minus a divided by n ठीक है h की वैल्यू कत बराबर है b minus a divided by n ठीक है b minus a divided by n कित पे हेको h की वैल्यू करित h is size of the interval size कित पे निमो सो गो क्या b minus a is length of the interval total length of the interval कूचा divide by आत कूचा parts करा आत कूचा parts करा so if we have इस पर जन suppose 1 to 10 ठीक है या 0 to 10 0 to 10 जन सेंटीमीटर मज लेंथ 0 to 10 जन सेंटीमीटर मज लेंथ समझ what will be length of the interval कत बराबर upper value minus lower value ठीक है upper value minus lower value upper value is 10 minus 0 so size of the interval length of the interval is upper value minus lower value it will be 10 minus 0 that will be 10 ठीक है image length 10 आज जन करो suppose 5 हिस्सन करो ठीक है 5 suppose 1 2 3 4 5 ठीक है 5 हिस्सन कर टोटल सो प्रत कुन हिस्से लेंथ कूता ये पे होता है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 2 2 ठीक है सो इक्वल लेंथ कूता दिल 2 ठीक है सो 10 divided by 5 so length of the यानी size of the interval is कूता length of the interval divided by आत कूता हिस्से करा so b minus a so here we are dealing with the interval ab interval image length कूता गई b minus a divided by n means इसके क्या हिस्से करा ठीक है in how many parts we are dividing this interval so b minus a divided by n so this will give us as the size of the interval ठीक है interval size कूता interval length कूता निमो ठीक है so h is equal to b minus a divided by n और अगर ये n करो इस योर शिफ्ट ठीक है we can manipulate things here so we can write nh is equal to b minus a ठीक है so to be more precise इस करो ज्यादा nh is equal to b minus a question पे apply now this thing so definite integral is limit of sum so this definition integral a to b f of x dx which is equal to limit h tends to 0 h times f of a plus h f of a plus 2h plus up to f of a plus n minus 1 into h last a plus n minus 1 into h ठीक है what is a here a क्या है यम इंटरवल स्टार्टिंग पॉइंट दैट मीन्स युस इंटेग्रल करा इवेलुएट दिस इज इंटायरली एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट f of a is the function of the starting point f of a plus h at a plus a यानी starting point करा h add where h is the
length of the interval. H value kath barabar chu b minus a divided by n, or we can simply say nh is equal to b minus a. ठीक है, then we can write f of a plus 2h plus up to f of a plus n minus 1 into h. ठीक है, a plus n minus 1 into h. ठीक है, so h is equal to b minus a divided by n. You see equality. This equality is called the definition of the definite integral as limit of sum. ठीक है, you see equation, this equation is called the definition of the definite integral as limit of sum. ठीक है, so simply वुचो अगर इस definite integral as limit of sum introduce कर, we introduce this as area under the curve. So we have a given function y is equal to f of x, which is divided अगर इस a to b वुचन area under the curve, then we simply divide this area a to b use area इसे divide into a small rectangles. ठीक है, into small rectangles. A B is करा partition of size n. ठीक है, A B से करा partition of size n. इसे करा divide into small rectangles. तुम्हारा rectangle होनी ये area इसे करा calculate that happens to be f h times f of a plus h times f of a plus h times f of a plus h. तुम सारी इन rectangle इन्हें करो sum, so it will be sum of all the rectangles. But best approximation guys is still hasil when h will tend to 0. ठीक है, obviously when h will tend to 0 n will tend to infinity. कौन सा चीज़ क्या h tends to 0 बजाय n tends to infinity ते यातन use करना. ठीक है, in that case we write h से value देमा b minus a divided by n. Alternate definition चाहिए. So limit the definite integral will be given by a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 बजाय अगर इसको limit करो use n tends to infinity. So इसे को याद लिखिए limit n tends to infinity, but h की जगह फिर हमें यूज करना है b minus a divided by n. ठीक है, b minus a divided by n. Obviously b minus a is constant, it will be a fixed number. यह कोई सेम limit मज़ाल त्रे. Then we have to deal with b minus a. यातन लिखने b minus a into limit h tends to 0. Then we will have to write 1 divided by n. 1 divided by n. यातन समझो अब क्या सुना सुना ये definition a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0. You see इसे limit करें evaluate in terms of h, but when h tends to 0 n क्या कर n will tend to infinity, यानी ये limit है को in terms of n tends to infinity ते evaluate करे. So in that case that case में क्या लिखो इसलिए को h ची जाए h क्या दिमो इस वैल्यू b minus a divided by n, यानी इतना लिखो इस b minus a divided by n, but limit कुछ करो यूज n tends to infinity. So it will be limit n tends to infinity b minus a divided by n into this whole thing. ठीक है, but b minus a you see b minus a it is constant, यह कोई ये limit never ट्रेड. So it will be b minus a into limit n tends to infinity 1 divided by n. In that case 1 divided by n. ठीक है, so इसे को in terms of n टी evaluate करें, in terms of h टी evaluate करें, but more preferable is we will calculate the limit in terms of h. ठीक है, so it will be the definite integral as limit of sum will be given by a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 f of a h times f of a plus h f of a plus 2h plus up to f of a plus n minus 1 into h. ठीक है, but here we have to note where n h value का बराबर b minus a. ठीक है, n h is equal to b minus a. ये लिमिट कंप्यूट करने खतर से मैक्सिमम जाए n h वैल्यू रिप्लेस करो. ठीक है, n h वैल्यू कैसे रिप्लेस करो, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग लिमिट h टेंड्स टू 0. ठीक है, अगर इसे h दिमो ये वैल्यू 0 द इंटायर एरिया विल टर्न आउट टू बी 0. ठीक है, बट ऑब्वियसली एरिया 0 बराबर कि देयर इज सम एरिया अंडर दिस कर्व. ठीक है, अमुक मतलब h वैल्यू से रिप्लेस करो. h वैल्यू रिप्लेस करने खतर क्या करो, इस विल प्रेफर यात जाए nh जाए लगाओ इस क्या b minus a वैल्यू. ठीक है, अब लिखिए 7.8 क्वेश्चन नंबर 1. हियर कैन से सुना evaluate the following definite integrals as limit of sum. So question number 1 है सुना integration of a to b fx dx. ठीक है, a to b fx dx. सारे क्वेश्चन मन सेम अप्रोच. सो एक क्वेश्चन मज अगर तो यह समझ व्हाट वी आर डूइंग, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आर इजियर. सो इफ वी हैव डायरेक्ट सारे क्वेश्चन मज लेखुन बाय डेफिनिशन.
So by definition, I switch on my definition of the definite integral as limit of sum. So what is that? So a to b f of x dx. So by definition, the definite integral as limit of sum will be given by a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 h times f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to last month क्या है f of a plus n minus 1 into h n minus 1 into h. But here where nh is equal to b minus a, nh is equal to b minus a, nh is equal to b minus a. ठीक है, which is याथ मंच simply वुशन as function of value. What is the lower value and what is the upper value. ठीक है, so अगर इस चीज लिखो here a is equal to lower value काथ बराबर छ a. ठीक है, a is equal to a. और कुछ साथ है कि a different है. अगर इस याद सिद्ध करो compare होते हैं b का value से 0 to 2 जाना है ताकि केस में क्या है एक value 0. ठीक है, b अगर upper value value छ b से बराबर है. ठीक है, and then nh value काथ बराबर है. nh will be again b minus a, nh is equal to b minus a. and f of x value काथ बराबर छ f of x is here, f of x is equal to x. ठीक है, so in fact integral chose में a to b x dx. ठीक है, so f of x is equal to x. So f of x is equal to x. मगर याथ में अगर इस वैल्यू वुचो वैल्यू क्या यूज करूँ f of x is equal to x. वैसे छन साइडस कुन कैलकुलेट करने जरूरत की मगर अगर तो ध्यान थयो so f of x is equal to x. What will be f of a? f of a will be a, f of a plus h, ठीक है, f of a plus 2h, ठीक है, so this will be simply a plus 2h. Last part will continue likewise, so we'll have f of a plus n minus 1 into h, f of a plus n minus 1 into h. क्या बराबर है a plus n minus 1 into h. ठीक है, so अगर यूं वैल्यू करो सारी याथ मज रिप्लेस. So therefore we have integral a to b x dx. Integral a to b x dx is equal to limit h tends to 0 h times with the simply it value. ये step है कि तो b एक साथ repeat करिए मगर ज़रूरत तेशन क्या. So what will be value of f of a? एक value क्या है a. ठीक है, f of a का value a plus a plus h plus f of a plus 2h plus up to a plus n minus 1 into h. ठीक है, where nh is equal to b minus a, ठीक है, which will be equal to limit h tends to 0. ठीक है, उमर वन इन पर सिंप्लीफिकेशन किस पर करो यार शाबाश लाइक टर्म्स करो इस इसी जाए जमा. ठीक है, a so we will add up a, so we can write a plus up to a. ठीक है, but how many times we are adding up a, so this will be n times. ठीक है, in fact ये तन है कोई लिखित n times, so we are adding up a n times plus इन पर अगर इस वो क्या रूट a मगलेवा वो क्या करो इस h plus 2h plus 3h plus up to last term क्या है n minus 1 into h. So which is equal to limit h tends to 0 h times a plus a how many times n times, so this will be n times a plus युमो terms अगर इस h करो common, so it will be h times 1 plus 2 plus 3 plus up to last term क्या है n minus 1, so which is equal to limit h tends to 0 h times n into a plus h into अगर वो u हो. ठीक है, so this is sum of first n minus 1 natural numbers. ठीक है, ऐसे already पता sum of 1 plus 2 plus 3 plus up to n. So sum of first n natural numbers का बराबर क्या है n into n plus 1 divided by 2. Sum of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 divided by 2. n into n plus 1 divided by 2. But it क्या है nth term n minus 1. ठीक है, it is nth term n minus 1. So that means we will be adding up n चीज़ क्या कैसे replace
n minus 1. So we'll write n to jai replace n minus 1. Then we'll write n minus 1 plus 1 divided by 2. ये क्या है? n minus 1 ऊपर होगा n, so it will be n into n minus 1 divided by 2. ये चीज सम का बराबर n into n minus 1 divided by 2. Sum of first n terms yil ke barabar chasa kat n into n plus 1 divided by 2. But here sum of first n minus 1 terms will be n into n minus 1 divided by 2. So it will be n into n minus 1 divided by 2. ठीक है? So which aim पर simplification है? Simplification येम पात छे वो important है. अगर तो येम पात करें ना simplification मज हैकन के steps अलाते गए, but you have to minimize the simplification here. So उसे किस पर है को इस minimize करें simplification. So if we write limit h tends to 0, अब h का multiply करूँ, but this has to be multiplied wisely here ताकि h गसन steps reduce. So n into अगर इस साथ h करो multiply, so this will be n a, ठीक है, n a into h, n a into h प्लस ये h करो गणित ये h ते मल्टीप्लाई, ये h ते मल्टीप्लाई गणित करो h मल्टीप्लाई, मगर ये h है को कत सहित यह को यह सहित मल्टीप्लाई कर, यह को n minus 1 सहित मल्टीप्लाई कर, मगर इस थाव कत सहित निब्र कने मल्टीप्लाई. ठीक है? सो इट विल बी nh into n minus 1, nh into n minus 1 वरूद ये h करो पद कर मल्टीप्लाई, फर्क पैसा कि ठीक है. अल्टीमेटली इसे एक्सपेंड करो, याद गए ह्यूमन सारे टर्म से बी मल्टीप्लाई divided by 2 समझ आवा जाता है. ठीक है? ये h को n से मल्टीप्लाई, सो वी राइट nh. ठीक है? n minus 1 ये h को पतमे साइड मल्टीप्लाई. आवर एम इज इस मैक्सिमम जाइन nh. ठीक है? nh की वैल्यू कत बराबर b minus a, nh की वैल्यू b minus a. So this will be now limit h tends to 0, limit h tends to 0. ठीक है? n into h. ठीक है? यह को इस पर लिखित nh into a, nh into a. What is nh equal to? nh की value, so this will be b minus a, b क्या नेबर कर multiply a प्लस nh बदल है इस वैल्यू दी ब्याख स्टेप अगर इस गणित लिखो, सो दिस विल बी nh into ये h करो यथ n minus 1 मल्टीप्लाई. ठीक है? ये क्या nh minus h, सो दिस विल बी nh minus h. ठीक है? यतन यह स्टेप्स में गस मेन एम थावन मैक्सिमम जाइन अन क्या nh. ठीक है? nh. So divided by 2 which will be limit h tends to 0. So this will be b minus a into a plus nh का वैल्यू b minus a into कैसे b minus a minus h. ठीक है? minus nh स्क्वायर अगर वो यहाँ से मल्टीप्लाई करो ये गो nh. देखिए दिस इज b minus a, nh इज b minus a. अगर वो अंदर का ब्रैकेट था दिस इज b minus a minus h divided by 2. अगर वो h दिमो वो लिमिट अतामत हेकान डायरेक्ट लिमिट दित कह. देखिए अगर यहाँ यतन जन करो लिमिट यूज, यतन क्या ये 0 into दिस होल थिंग, ये सोरी एरिया ये 0 बराबर. ठीक है? मगर एरिया ना अदामत एरिया कहीं ना कहीं एरिया है कि. ठीक है? एरिया 0 बराबर इंटायरली एरिया 0 बराबर कह. बट हियर वह अगर यतन दिमो यतन जन करो लिमिट यूज b minus a यथ मे h टर्म मगलेन आए सह कर रिप्लेस कम n into h टर्म कर रिप्लेस कम b minus a सत. ठीक है? वह यत योत h यम साथ h दिमो वैल्यू 0 ये टर्म बन 0. ठीक है? सो दिस विल बी b minus a into b minus a minus 0. यानी ये टर्म पे ना वो इन h सत पे ना वो फर्क कह. So this will be now b minus a into a plus b minus a whole square divided by 2. ठीक है? ये ना 0 दिस इज इशना मगर b minus a इशना मत सब्ट्रैक्ट b minus a minus h minus 0 b minus a minus 0. सो क्या ही b minus a सो b minus a से ऐसे मल्टीप्लाई b minus a into b minus a. अगर यतन आई ऐसे ना सोरी h in that case ये कत बराबर 0 मगर इशना minus h will be minus 0 b minus a minus 0 that will be b minus a गस पत या b minus a से मल्टीप्लाई. ठीक है? वह को इस मल्टीप्लाई करे सिंपली इन ऑर्डर टू कैरी द मोर सिंप्लिफिकेशन यतन लिख गो. सो दिस इज नाउ
b minus a ठीक है b minus a so we can write अगर डायरेक्ट करो multiply so this will be 2 अगर गोडनेथ करो योर multiply 2 into शाबाश b minus a so this will be ab minus a square ठीक है b minus a whole square कत बराबरी b square plus a square minus 2ab divided by 2 so this will be 2ab minus 2a square plus b square plus a square minus 2ab divided by 2 ठीक है टर्म गसन कैंसल 2ab plus 2ab minus गस कैंसल b square अगर इस गोडनेथ लिखो b square minus 2a square minus 2a square क्या है minus a square divided by 2 ठीक है so this will be the final result वह कोई वह जो लास्ट पे चेक ते करा ना युस आंसर कोड सुकोर आए ठीक है ना केन तेम खतर है कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन यत करे देखिए if we check say if we have a to b x dx अगर इस डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसे करें तिल ओस नहीं मसला केन so x is integration x square divided by 2 within limit is a to b पांच दिन कोने क्या upper value minus lower value x is upper value minus lower value 1/2 है कुछ never try so it will be x is x square is क्या upper value to be lower value so it will be 1/2 b square minus a square ठीक है so which is b square minus a square divided by 2 ठीक है direct to solve but as limit of sum you have to do some manipulations here. Number 2 is integration of 0 to 5 x plus 1 dx ठीक है so we have to find the integral of 0 to 5 x plus 1 dx by evaluating it as limit of sum ठीक है अदामिक पर लिखो is by definition so by definition so integral of a to b fx dx is equal to integral of a to b fx is equal to limit h tends to 0 shabash manan h times f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to f of a plus n minus 1 into h where nh is equal to b minus a ठीक है so ये अगर इस वुचो so here a is equal to a value क्या है 0 b is equal to 5 ठीक है so therefore nh का बराबर है nh is equal to b minus a is equal to 5 minus 0 यानी nh की वैल्यू का बराबर है 5 nh is equal to 5 ठीक है so also f of x is equal to x plus 1 अगर वो साइड था वो इस f of we have to find value of f of a plus h f of a plus 2h f of a plus n minus 1 into h so we have f of x is here f of x का बराबर है x plus 1 what will be f of a यहाँ जाए x ता जाएगा replace a ठीक है so it will be a plus 1 so f of a plus h ठीक है यह फंक्शन में जाए x ता जाएगा replace a plus h so this will be a plus h plus 1 f of a plus 2h यह फंक्शन में जाए x ता जाएगा replace a plus 2h so this will be a plus 2h plus 1 ठीक है इथे पर f of a plus 3h का बराबर है a plus 3h plus 1 what will be f of up to a plus n minus 1 into h that will be a plus n minus 1 into h plus 1 ठीक है यूं वैल्यू करो वो यह मस्ट बी एस रिप्लेस so therefore we have 0 to 5 integral 0 to 5 x plus 1 dx equals limit h tends to 0 h times f of a का value f of a is equal to a plus 1 so this will be a plus 1 plus f of a plus h value a plus h plus 1 f of a plus 2h plus 1 plus up to last term a plus n minus 1 into h plus 1
सो आप सिंप्लीफाई कीजिए, दिस विल बी अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अगेन सिंप्लीफिकेशन उस प्रीवियस क्वेश्चन मज करे a करो इस एक जाए जमा a सो वी कैन राइट a plus a how many times, n times, so this is a n times, and then 1 उनके करो इस एक जाए जमा, so it will be plus 1 plus 1 plus 1 how many times, n times, again 1 n times, plus इन पर करो इस क्या a ते मगलियावा 1 ते मगलियावा क्या रूल h 2h, ठीक है, so we can write h plus 2h plus 3h plus up to last term क्या है n minus 1 into h, ठीक है, so this will be now limit h tends to 0, limit h tends to 0, so h times a अगर वो वैल्यू दिमो, what is value of a 0, ठीक है, so अमुक मतलब ये टर्म मगले सोरे 0, so this will be 0 plus 1 into 1 how many times, and so this will be n into 1 plus नेम टर्म में क्या करो h कॉमन, ठीक है, h करो कॉमन, रिमेनिंग इज 1 plus 2 plus 3 plus up to n minus 1, ठीक है, मिस मांगो की, so this will be limit h tends to 0, limit h tends to 0, so अब n, so this will be h into n plus h into ये करो atomic part sum of first n minus 1 terms, what is that, n into n minus 1 divided by 2, n into n minus 1 divided by 2, ठीक है, फिर से अब h multiply कीजिए अंदर, so it will be limit h tends to 0, ठीक है, nh plus ये n करो atomic part b या then multiply nh, ठीक है, ये h करो अंदर मल्टीप्लाई nh n minus 1, so it will be nh minus h divided by 2, nh is वो value, what is value of nh 5, ठीक है, nh is equal to 5, so this will be limit करो at the same time use, limit h tends to 0, so this will be 0 here, ठीक है, nh value 5 plus 5 into 5 divided by 2, ठीक है, so this will be 5 plus 25 divided by 2, cross multiply अगर ये करो, so this will be 35 divided by 2, ठीक है, 35 divided by 2, समझ आया वहाँ 35 divided by 2, मगर खुद इस क्वेश्चन में गोश एक चीज़ मुश्किल, ठीक है, this is area under a curve, area चीज़ पता, area चीज़ in square units लेखन, ठीक है, so ये लेखो इस दिल क्या 35 by 2 square units, ठीक है, so 35 by 2 square unit, समझ आया वहाँ simple चना. Question number 3, integration of 2 to 3x square dx. Question number 3 एक बार करिए. Question number 4 फिर देखिए. Integration of 1 to 4. So integration of 1 to 4 x square minus x dx, x square minus x dx. ठीक है, x square minus x dx, इतने को b लिखित by definition वो है a to b, f of x dx is equal to this thing, a is equal to a का value, a is equal to 1, b is equal to 4, b is equal to 4, that means nh is equal to, so this will be equal to 4 minus 1, so this will be equal to 3, ठीक है. Now here we have f of x value का बराबर f of x is equal to x square minus x, ठीक है, what will be f of a then, a square minus a, ठीक है, f of a plus h, यह फंक्शन में यह जाए x ताज जाए a plus h replace, ठीक है, simply a plus h whole square minus a plus h, इधर पर f of a plus 2h, a plus 2h whole square minus a plus 2h, f of a plus 3h, a plus 3h whole square minus a plus 3h, ठीक है, लास्ट पेड क्या है f of a plus n minus 1 into h, a plus n minus 1 into h, here again whole square minus a plus n minus 1 into h, ठीक है, यो वैल्यू करो सिंपली यह में रिप्लेस,
So therefore we have integral 1 to 4 x square minus x square minus x dx is equal to, ठीक है, 1 to 4 x square minus x dx is equal to, so it will be equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0, h times f of a का value a square minus a, ठीक है, वार थे जो calculation मज ध्यान, a square minus a plus, so it will be a plus h whole square minus a plus h plus a plus 2h whole square minus a plus 2h whole square, यहाँ लिखो ब्याक स्टेप, plus a plus 3h whole square minus a plus 3h, ठीक है, प्लस लास्ट क्या ही a plus n minus 1h whole square minus a plus n minus 1 into h, ठीक है। सो आप सिंप्लीफाई कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h tends to 0 h टाइम्स a square minus a थावन अति फिलहाल, ठीक है, फिलहाल करो गोडनेथ सिंप्लीफाई, so this will be a square minus a plus अगर ये करो इस वो ये ब्रैकेट जन करो इस सिंप्लीफाई a plus h whole square minus a plus h, so this will be a square plus h square plus 2ah minus a minus h, ठीक है, minus a minus h plus a square plus 4h square plus 4ah minus a minus 2h, और फिर से प्लस a square plus 9h square plus 6ah, ठीक है, a plus b whole square formula apply minus a minus 3h plus up to last पेड क्या ही a square plus n minus 1 square into h square plus 2a into n minus 1 into h, ठीक है, माइनस ये टर्म मिटा बन जाता ना, सो माइनस a minus n minus 1 into h, ठीक है, n minus 1, so which is equal to limit h tends to 0 h times a square, अगर वुचो a square ची टर्म करो इस एक से जाए जमा गोडने जन करो कैंसिलेशन जन करो, so a square ची टर्म करो एक से जाए जमा a square here a square करो एक से जाए जमा, ठीक है, so it will be a square plus up to a square, how many times, n times, plus ये अगर थोड़ा वो सिंप्लीफिकेशन करो, देखिए h square, so यातन अगर वुचो h तो भी ये माइनस h कैंसिलेशन गस नहीं कहें, ठीक है, कैंसिलेशन गस नहीं कहें, मगर कैंसिलेशन हेकाव इस करित अगर इस हिर दिमो कत a ची जाए दिमो इस वैल्यू 1, ठीक है, एक्चुअली a क्या वैल्यू 1, a is equal to 1, अगर इस a दिमो वैल्यू 1 ये कैंसिलेशन गस तिल यातन, देखिए a का वैल्यू 1, so 1 minus 1 गस ना कैंसिल, ठीक है, so 1 minus 1 अगर वो a दिमो वैल्यू 1 कैंसिलेशन कॉमन हेको कड़ित और गोडनेथ करो इस a वैल्यू कैंसिल, so this will be limit h tends to 0 h times a का वैल्यू 1, so this will be 1 square minus 1 plus a square वैल्यू 1, ठीक है, 1, so this will be 1 plus h square minus 2h, a वैल्यू 1 minus 1 minus h, ठीक है, प्लस यहाँ भी वैल्यू दीजिए 1 square आख स्टेप करो कम, आख स्टेप करो कम, देखिए ये स्टेप करो इस इरेज, आख स्टेप करो इस कम, ठीक ऑलरेडी से जाए कम, देखिए ये a square minus 1 1 minus 1 ये गया कैंसल, ठीक है, a square 1 minus 1 ये टर्म गया कैंसल, ये a तभी ये गया कैंसल, देन a square 1 square ये टर्म ते गया कैंसल, यानी a square तभी a टर्म मकलेस,
So only will be left limit h tends to 0 h into, so ये क्या है then h square plus 2h एक वैल्यू 1 h square plus 2h minus h square plus 2h minus h ये मज समझ आया हुआ प्लस ये मज क्या रोज 4h square plus 4h minus 2h प्लस अब इसमें से 9h square plus 6h minus 3h प्लस एक वैल्यू 1 प्लस a square तो भी a square गैस कैंसल सो इट विल बी n minus 1 whole square h square plus 2a n minus 1 into h minus n minus 1 into h ठीक है एक वैल्यू गो ना बाकी जान गो ना एक वैल्यू यूज 4a बस ठीक है 4h minus 2h ठीक है एक वैल्यू दे सिंपली 1 है 1 to 1 gets cancel एक वैल्यू 1 so this will be now limit h tends to 0 h times so this will be now h square 2h minus h plus h plus 4h square 4h minus 2h so this will be plus 2h 9h square 6h so this will be plus 3h plus last term क्या है देखिए n minus 1 whole square h square plus last term है twice n minus 1 h दोन n minus 1 h n से subtract करा आख n minus 1 h क्या है n minus 1 into h so this will be n minus 1 into h ठीक है सो आप सिंप्लीफाई कीजिए फिर से सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ठीक है h स्क्वायर टर्म अगर कॉमन करो सो दिस विल बी h स्क्वायर ची टर्म h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस अप टू n minus 1 whole square into h square n minus 1 whole square into h square plus h terms करो जमा h 2h 3h plus up to n minus 1 into h so this will be h into h plus 2h plus 3h plus up to last term क्या है n minus 1 into h ठीक है now this is h square अगर नेम टर्म में करो h square common यमो टर्म में so यमो मज करो इसके h common ठीक है यमो मज करो h common name term मज h square common name term मज h common so we'll have limit h tends to 0 ठीक है h into h square 1 plus 4 plus 9 plus up to n minus 1 square plus h into 1 plus 2 plus 3 plus up to n minus 1 into h ठीक है देखिए फिलहाल यहाँ आप कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को सो विल राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स h स्क्वायर छ इथे पे सो इट विल बी h स्क्वायर इनटू सो दिस इज इसे को एक पर लिखित 1 स्क्वायर 1 छ ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 विल बी 3 स्क्वायर plus up to n minus 1 whole square plus h into you get already sum of first n minus 1 terms ठीक है sum of first n minus 1 terms what is that equal to n into n minus 1 divided by 2 so which is again equal to limit h tends to 0 h times so this will be h square ठीक है so this is sum of first n squares sum of first n squares is pada 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square sum of first n squares का बराबर चासा n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 n into n plus 1
into 2n plus 1 divided by 6. ठीक है, but here we are computing the sum of first n minus 1 squares. n minus 1 square simply गैस याथ मज replace क्या n की जाए n minus 1, so it will be n minus 1 into n minus 1 b क्या plus 1 into twice n की जगह n minus 1 plus 1 divided by 6. So it will be n minus 1, ठीक है, minus plus, so it will be only n. So 2n minus 1, 2n minus 2 plus 1. So क्या है 2n minus 1, 2n minus 1 divided by 6. ठीक है, so we will have here n into n minus 1 into 2n minus 1 divided by 6. Plus h करो यहाँ से multiply, so it will be nh into n minus 1 divided by 2. So which is equal to limit h tends to 0 h times ये h स्क्वायर करो वो डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, h स्क्वायर करो वो डिस्ट्रीब्यूट, मैक्सिमम जाइन चीज कोशिश करें क्या nh nh, ठीक है, मैक्सिमम जाइन कोशिश करें nh nh, h स्क्वायर लिखो इस h into h, आख h करो यात n से मल्टीप्लाई, so it will be nh, ठीक है, nh आख h को ना यात n से मल्टीप्लाई, ब्याक h करो का सर यात n से मल्टीप्लाई, so it will be nh minus h into 2n minus 1 divided by 6. समझ आया वहाँ, देखिए h है कोई लेकिन h स्क्वायर into h आख h करवा यहाँ से कंबाइन सो क्या nh, ब्याक h करो का से nh minus h मल्टीप्लाई, अगर इस करो ना ह्यूमन टर्म b e स्टेप वापस, ठीक है, मगर nh मैक्सिमम जाइन अन फायदे nh वैल्यू पता. व्हाट इज वैल्यू ऑफ nh का वैल्यू 3, व्हाट वाज दैट 3, ठीक है, सो nh इज इक्वल टू 3 हियर, सो प्लस nh into n minus 1 divided by 2 वरूद ये h, ठीक है, ये h करो वो आ करो नीम साइड में मल्टीप्लाई, बे करो नीम साइड में मल्टीप्लाई, ठीक है, पद करो यात 2n minus 1 ये मल्टीप्लाई, ये करो n minus 1 मल्टीप्लाई, so it will be limit h tends to 0 nh into nh minus h into 2nh minus h divided by 6. समझो इसका शायद करा मैक्सिमम जाइन चीज nh कोशिश करा, so तेम खातिर कोर आख h स्क्वायर कोर ब्रेक into h आख कोर यात से मल्टीप्लाई, आख कोर यात फैक्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये h कोर यम साइड पोस्ट ऑपरेट मार पात कोर का फैक्टर से मल्टीप्लाई 2nh minus h, ठीक है, इम से गो ये कैलकुलेशन सिंपल कि nh चीज जाए है कोई वैल्यू डायरेक्ट दे, प्लस nh minus h divided by 2, ठीक है, अब nh का वैल्यू रिप्लेस कीजिए सती, अगर इसको hs दिमो लिमिट, hs है को वो लिमिट दिए, ठीक है, गोडनेथ करो वैल्यू टीम पर दिमो लिमिट है, सो nh का वैल्यू, सो लिमिट h tends to 0 3 into 3 minus h 2 into 3 minus h divided by 6 plus 3 into 3 minus h divided by 2, ठीक है, अब h का वैल्यू h इज लिमिट 0, सो दिस विल बी 3 into 3 2 into 3 that will be 6 divided by 6 plus 9 divided by 2 6 and 6 will cancel, so this will be 6 plus 9 divided by 2, ठीक है, 9 plus 9 divided by 2 divided by 2 which will be 27 divided by 2 square units. Yes, current examples. E क्या है ना 1 to 1 e raised to power x dx ठीक है, so again we can write by definition we have integral a to b fx dx is equal to, so this will be limit h tends to 0 h times shabash f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to f of a plus n minus 1 into h, where nh is equal to b minus a, ठीक है, nh is equal to b minus a, so we can write here f of x का बराबर ची e raised to power x, a is equal to minus 1, b is equal to 1, ठीक है, so therefore nh is equal to b minus a, nh is equal to b minus a, that will be b value 1, ठीक है, b च minus already, so minus 1
ठीक है. So that means b minus a is equal to 2. b minus a is equal to 2. So which is f of x? f of x का बराबर है f of x is equal to e to the power x. So what will be f of a? e to the power a. ठीक है. So e raised power a. So what will be f of a plus h? e raised to power a plus h. f of a plus 2h. e raised to power a plus 2h. ठीक है. f of a plus 3h. e raised to power a plus 3h. ठीक है. लास्ट पैट क्या है? f of a plus n minus 1 into h. a plus n minus 1 into h. ठीक है. So this will be e raised to power a plus n minus 1 into h. ठीक है. तो क्या लिखा अमर आर्टस में वाक्य काय भी. So f of a plus n minus 1 into h, it will be e raised power a plus n minus 1 into h. ठीक है. अब ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कीजिए. So therefore we have minus 1 to 1 e to the power x dx is equal to limit h tends to 0. h times f of a. f of a is equal to e raised to power a plus e raised to power a plus h. a plus h plus e raised to power a plus 2h plus e raised to power a plus 3h plus up to e raised to power a plus n minus 1 into h. So this will be equal to limit h tends to 0. ठीक है. limit h tends to 0. limit h tends to 0. h times so e raised to power यहाँ पे e raised to power a plus ये थे कोई स्प्लिट करी थी e raised to power a plus h into e raised to power a into e raised to power h. ठीक है. bases are same. power and guys add plus e raised to power a into e raised to power 2h. e raised to power a plus e raised to power a into e raised to power 3h plus up to e raised to power a e raised to power n minus 1 into h. ठीक है. basis to same. power and guys add. So this will be now limit h tends to 0. limit h tends to 0. h times सारी terms अगर इस e raised to power a करो common. So it will be e raised to power a. e raised to power a. So what is left over? 1 plus e raised to power h plus e raised to power 2h plus e raised to power 3h plus up to e raised to power n minus 1 into h. ठीक है. So e raised to power अगर वो वैल्यू दिमा. what is value of a? minus 1. So it will be limit h tends to 0. limit h tends to 0. h into e raised to power a. So e raised to power minus 1. e raised to power minus 1. e raised to power minus 1. Now ये side so this is not in arithmetic progression. It is human question में विशाल. So the sequence we were obtaining that was in the arithmetic progression, but this sequence is in geometric progression. ठीक है. geometric progression with common difference, common ratio. कुछ ऐसा common difference यहाँ पे common ratio. common ratio का बराबर है e raised to power h. common ratio है e raised to power h. ठीक है. सो अगर जियोमेट्रिक सीरीज आए सो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सो अमुक सम आसा बराबर a इंटू आर रेज्ड टू पावर n minus 1 divided by r minus 1 where a is the first term, r is a common ratio. r is a common ratio. What is common ratio here? e raised to power h. common ratio is e raised to power h. So it will be so a into a का वैल्यू a क्या है? फर्स्ट टर्म छे 1. ठीक है. ये दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज उक सम छ आसा बराबर का a into r raised to power n minus 1 divided by r minus 1. कॉमन रेशो अगर तो ये काढुन छ तिल हेकु यह टर्म तो पानवे डिवाइड करित. ठीक है. अदनेर e raised to power h as the common ratio. So it will be 1 into e raised to power h e raised to power r raised to power n. r का वैल्यू क्या है? So this is geometric series with a is equal to 1, r is equal to e raised to power h. r is equal to e raised to power h. So this will be e raised to power h. Here can just more power n. So it will be n minus 1 divided by r का वैल्यू e raised to power h minus 1. e raised to power h minus 1.
which is equal to limit h tends to 0 h into e raised to power minus 1. This can be written as 1 by e. Since 1 by e is constant, यह कोई limit मज L 3. So it will be 1 divided by e into limit h tends to 0 h times. So this will be e raised to power h into n. So this will be e raised to power nh minus 1 divided by e raised to power h minus 1. E raised power h minus 1. ठीक है. अब यहाँ पे नोट दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय each is ऑलरेडी ये h हेको इस कंबाइन करित e raised to power h minus 1 से. So it will be h divided by e raised to power h minus 1. ठीक है. इनटू हेको लिमिट हेको इस अलग डिस्ट्रीब्यूट करित 1 by each से मल्टीप्लाई. Limit h tends to 0 e raised to power nh minus 1. E raised power nh minus 1. ठीक है. ये हेको नहीं h में हेको इस अंदर मल्टीप्लाई करित. एच में है मल्टीप्लाई कर. ठीक है. ये मल्टीप्लाई कर एन एच वैल्यू ती कह. दैट मीन्स वी हैव टू डील विद इट अ बिट डिफरेंटली. अम खर क्या करो एच करो कंबाइन का ई रेज टू पावर एच माइनस 1. ठीक है. वी हैव स्पेशल लिमिट. सो वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 divided by x. अमुक लिमिटिंग वैल्यू 1 बराबर. ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised power x minus 1 divided by x. दिस इज इक्वल टू 1. इन फैक्ट अगर इसमें रेसिप्रोकल ते निमो सो इट इज x divided by e raised to power x minus 1. So at limit x tends to 0 this is equal to 1. So here we are dealing with limit h tends to 0. Limit h tends to 0 h divided by e raised power h minus 1. इमुक वैल्यू का बराबर ही 1. So this will be equal to 1 by e. ठीक है. इमुक लिमिटिंग वैल्यू का बराबर 1 is बराबर into शबाश लिमिट h tends to 0 याथ nhs हेको वो वैल्यू दे. So it will be limit h tends to 0 e raised to power nh का वैल्यू 2 minus 1 e raised power 2 minus 1. So into ये सारी टर्म multiplies मज. So this will be limit h tends to 0 e raised to power 2 minus 1 divided by e. But this being constant e raised power e square minus 1 divided by e. ठीक है. इशा सारी constant h term आत मज केन. So this will be limit of a constant is a constant itself. So that means it will be e square minus 1 divided by e. ठीक है. Next is question number 6. Question number 6 is exactly e raised to power 2x. ठीक है. e raised power 2x such again geometric progression. But अच्छे common difference e है क्या e raised to power 2 common ratio e raised to power 2h. ठीक है. यदि common ratio e raised power 2h. So question number 6 कैसे exactly निमे question पर solve.